Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to another edition of Nifty Bank Nifty Weekend Analysis with SD. And I'm SD Shanando Das, Forex and Commodity Market Specialist. I'm a multi-asset trading and investment specialist as well. आज का जो वीडियो है I'll do it a bit different than my usual video. Usual video I look at the indices through my special setup. Here I'll look at a very simple chart, but one of my favorite, but few appreciate the awesomeness of that chart, that is the line chart. So line chart के जरिए we are going to take a look at the market first, then obviously we are going to take via our setup. So line chart के जरिए we are going to take a look at Nifty, Bank Nifty and Nifty 500. So let's make it the line chart. Open Nifty. I hope आप लोगों को almost दिख रहा है, ये थोड़ा हट गया है. Let me make it right. An inverse head and shoulder pattern का breakout हुआ है in the Nifty. This is the broadly the head. Head, left shoulder, right shoulder, inverse head and shoulder pattern. Nifty broadly has been bullish, still bullish. Last जो breakdown हुआ था did not work. Nifty is heading to test the top 22,500 to 550 area. This is quite clear from the beautiful line chart. And broadly, it's beautifully in bullish. So bull market is still not over in the Nifty. So this comeback looks quite strong. If I apply my momentum indicator, then I'll be able to see there is a crossover in the momentum, beautiful crossover in the momentum. So this is a strong comeback which cannot be ignored. So what will it be? Will it be a breakout or is it going to be a consolidation? Let's not focus on that. If it breaks higher, we are going to increase our spread, risk affinity, market में ज़्यादा quantity करना towards stock that we are going to do. If it does not, then we are going to slow down and we are going to do limited quantity, tighter stop loss, lesser breakout trades, more buy support kind of trades. That means we don't have to predict what is going to be to make money. We have to be on the right side of the market, and the right side currently it's still bullish. Let's look at the Bank Nifty. Bank Nifty, let's do some drawings. Let's do simple drawing, nothing complicated. So this is a range. We can see Bank Nifty is operating within this range. Let's remove these. So यहाँ पे जो दिख रहा है, let's draw some beautiful trend line. So trend line got broken, but it is coming back again. So bulls will now have to face whether they can break above the trend line. Further momentum आता है कि नहीं. तो अगर आप bullish है, that means you cannot afford to lose the momentum. Momentum crossover हो रहा है, there is a good comeback, but you need a continued good comeback. यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए. लास्ट हम लोग देखेंगे विद द ऑसम लाइन चार्ट इज द निफ्टी 500. क्या ब्यूटीफुल, इट्स क्वाइट क्लियर, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द टॉप. once again a strong comeback. So bull is not over. This is somewhat like a double top, is range ka triple top. So it has been tested 3 times. Now it is going to test the upper range the market. If it breaks higher, we are going to see some serious good move into stocks. We can increase speed and risk affinity once more. इसके साथ साथ I'll go back to my traditional chart जो मैं trading के लिए इस्तेमाल करता हूँ is the SD Rainbow Wave version 1. It is also showing a beautiful comeback in Nifty 500. It has given a buy support signal on 27th March and 28 it is moving higher Nifty 500. So दिख सकता है आप लोगों को, it is quite good. This chart pattern that I'm observing, it is also quite good in terms of trading. नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग निफ्टी 50. सिमिलर ब्यूटीफुल क्रॉसओवर. और व्हाट इज द वर्डिक्ट फ्रॉम आवर चार्ट पैटर्न? इट इज अ कमबैक. It is a comeback. 6 plus 4, 10 factors are bullish. 82% win probability. Only concern buy support, sell resistance is the recommendations as per trend. So हो सके ये जो लेवल हम लोग बताए, निफ्टी may not be able to break immediately, may take some time.
maybe the whole next week, and after एक important data आ रहा है non farm payroll, maybe उसके साथ a new breakout होगा a week after that. But it's overall still somewhat now bullish after the flat kind of correction. Nifty bulls are coming back strong. We'll look at the Nifty 500. Similar, sorry, we had already looked at Nifty 500, Nifty 50. Now we are looking at Bank Nifty. Coming strong comeback from these very important support levels जिसका बात हम लोग किए थे, is very strong. So break नहीं हुआ, it's a comeback. So it can be a bigger comeback to test these important resistance areas. So one is very important resistance 47,840 के आसपास, and another one is 48,400 के आसपास. So these Bank Nifty can continue to hover, is ये range में रह सकता है अभी भी, but it's not bearish at the moment. About 10 factors are bullish. Once again, buy support, sell resistance is the preferred trades. That means consolidation. हो सकता है upper you might find sellers. Probability is lower than Nifty, 68% win probability. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे a bit of sector rotation में क्या चल रहा है. And when I look at sector rotation, first I'll take a look at the gold. Gold में I have been already been long in gold, और I said will remain long in gold क्योंकि अभी भी मुझे asset class में hard asset में rotation दिख रहा है. Hard assets are outperforming better. Very likely this is the area which it has reached, and now may we see some consolidation. But overall hard asset पे rotation अभी भी जारी है. So it's still not very safe. It's still a value rotation is there. Silver में rotation has ended. Silver has not performed that well as the gold, so it has given a small green candle. So it's जो rotation हम लोग पहले जैसा उतना strong rotation नहीं है, but it's still quite at least gold is definitely working strong. Nifty to Nifty 100 का जो ratio, that is more shows the move towards stability, वो नहीं दिख रहा है. That means market में risk affinity है towards stocks. Individual stocks can continue to do well. This is the Nifty to Nifty 500 ratio. उसमें भी दिख रहा है कि फिर से bearish pressure ही ज्यादा है. We are seeing a minor rotation back to safety once more, ये green stocks के साथ, but overall risk affinity back हो चुका है. This greens were the time जब market was rotating more towards stability than towards riskier small cap or the growth stocks. So is it a right time to go for the small caps? That's a definite question जो सबके mind में आएगा. Yeah, somewhat small caps are getting warmed up. I've got a green signal in the small cap to 500 ratio. That means small caps can continue to perform well if the ratio is able to hold off 0.75 का जो bottom है, if it's able to hold off, yes. Confirmation के लिए background green हो जाए rotation का, it will be a more confirming signal. एक rotation back हुआ था, फिर से हम लोग थोड़ा सेफ्टी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ मूव देखे थे एट द एंड ऑफ द लास्ट वीक. दैट्स व्हाई वी हैव द रेड कैप्स. सो थोड़ा रोटेशन तो जरूर हुआ है स्मॉल कैप्स मिड कैप्स के तरफ, बट इट्स नॉट अ सुपर स्ट्रॉन्ग रोटेशन स्टिल. इसके साथ नाउ विल टेक अ लुक एट द सेक्टर्स. सेक्टर्स को हम लोग देखेंगे. सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, सारा सेक्टर्स देखना इज नॉट पॉसिबल. वन इज ऑटो, जिसका हम लोग बात किए थे. ऑटो सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग and this is the auto sector is significantly going up. 86% win probability. एक concern तो आ ही रहा है from this preferred trades की sell resistance बोला जा रहा है. Obviously resistance मतलब resistance तो है नहीं ऊपर if it's breaking all time high, but this kind of signal आने का मतलब है this can see some struggling move. जैसे ऊपर जाएगा it can go in zigzag volatility pattern. Then we have Nifty commodities, a good comeback. आने वाले दिन में new comeback can come up in the commodity segment, a full green candle. Then we are looking at Nifty energy sector.
Here is also a full green candle comeback. ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ कमबैक दिख रहा है वो ओवरऑल मार्केट सेगमेंट में ही दिख रहा है. सो सिम्स लाइक ये दिस लेटेस्ट राउंड ऑफ अ कमबैक जो दिख रहा है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. ये सीएनएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह रहता है. आई टेक अ लुक एट एफएमसीजी. थोड़ा टाइम ले रहा है. इट्स कम. एफएमसीजी की हम लोग बात किए थे. इट हैज नॉट बीन अ गुड सेक्टर राइट नाउ. काफी सारे कॉस्ट लाइक कोकोआ फिर जाके आपका रबर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल कॉस्ट आर गोइंग अप. सो एफएमसीजी अर्निंग्स के लिए वो अच्छे रीजन नहीं है. साथ में मार्केट अगर फिर से ग्रोथ की तरफ जा रहा है जो स्टेबिलिटी प्रीमियम मिलता है एफएमसीजी सेगमेंट को वो भी नहीं मिलेगा. सो एफएमसीजी इज स्टिल नॉट गुड. इट इज होल्डिंग अप. We may see comeback in the future, but it's still not there. Then we have CNX infrastructure, RSI का crossover, साथ में full green candle infrastructure में भी आया है. एक सेक्टर जो बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है that is IT. लास्ट डे हम लोग माइनर कमबैक देखे बट आईटी सेक्टर इज नॉट रेडी. सो अब लोग आईटी सेक्टर एज ए होल अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इट्स नॉट राइट. लेट्स अवॉइड द आईटी सेक्टर. मीडिया और एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत टाइम से वे बिफोर द आईटी सेक्टर ये बैटर हो रहा है. हो सके अभी थोड़ा एंड आ रहा है. कैंडल देखिए बहुत छोटा हो गया. मे बी देयर कुड बी सम कमबैक स्टोरी हैपनिंग इन द मीडिया सेक्टर बट बैकग्राउंड इज स्टिल रेड. It is far away from being bullish. Next we have the metal segment. मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं चार्ट का. This is the mother setup, fountain of gold. I could have used the individual index setup as well, but mother setup I can use across asset class. CNX metal also important area से comeback हो रहा है. So we will like to see further breakout to go into the metal segment. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एमएनसी. एमएनसी बहुत ही बेनिफिट किया है इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ जो रोटेशन हुआ था टुवर्ड स्टेबिलिटी. अभी भी उसका बेनिफिट चल रहा है. दिस वन सेक्टर लाइक ऑटो हैज बीन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड द स्ट्रेंथ कंटिन्यूज. नेक्स्ट इज सीएनएक्स फार्मा. दिस वाज बैटर्ड हुआ था बट अब फिर से कमबैक हो रहा है. नेक्स्ट वीक का फोकस रहना चाहिए क्या ये आरएसआई एक्स का क्रॉसओवर हो रहा है. Means more momentum coming back. You'd like to see a breakout of the segment 19,200 का जो index value है. This index value you'd like to cross. तो 19,200 पे आप alert 214 पे आप alert लगा दीजिए and you'll be alerted जब वो breakout हो रहा है तो आप और अपना quantity बढ़ा सकते हैं towards pharma sector. Public sector enterprise, another comeback story. Next week focus. Do we get a momentum crossover? मतलब और momentum ताकि हम लोग इसमें जाए. Otherwise, sectors like auto, MNC, they are doing much better. Next we have PSU बैंक. इनका तो अच्छा टाइम चला था फिर से आ सकता है. एक divergence दिख रहा है momentum and also a full green candle. Need more momentum. यहाँ पे crossover चाहिए तब जाके इस सेगमेंट इज गोइंग टू कम बैक. बट ऑलरेडी कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो हम लोग रखे थे अपने लिस्ट में लाइक करूर वैसा दोज हैव शोन सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ. फिर हम लोग जा रहे हैं सीएनएक्स रियल्टी सेक्टर में. सीएनएक्स रियल्टी सेक्टर में एक सिमिलर स्टोरी जैसा हम लोग निफ्टी 500 देखे सिमिलर कमबैक दिख रहा है हियर इन रियल्टी एज वेल. नेक्स्ट आ रहा है सीएनएक्स सर्विस. इसमें भी एक कमबैक चल रहा है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. द कैंडल इज फार अवे फ्रॉम फुल ग्रीन. आईटी सेक्टर जो मेजर सर्विस सेक्टर है दैट कुड बी वेइंग हियर एंड आईटी सेक्टर इज डेफिनेटली मच बैटर्ड. प्राइवेट सेगमेंट प्राइवेट सेक्टर में बहुत दिन बाद एक बाइंग सिग्नल आ रहा है बट हमें इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए 23,850 एरिया for the index to aggressively go into Nifty Private Bank. As a segment, individual stocks will start to fire up already before. This is another consumer durables comeback story. Crossover हो चुका है momentum का much stronger comeback. Healthcare another comeback story. Healthcare और बढ़ सकता है. It's a full green candle again after the correction. Now it is the time आप जो हम लोग exit कर गए थे
वार्निंग देख के यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट कमिंग बैक। इससे क्या हुआ, हम लोग पैसा सेव कर लिए ये सब फेज में, ना वो पैसे से हम लोग फिर से जा सकते हैं। इंडिया डिजिटल इंडेक्स ग्रीन, बट इसमें मोमेंटम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। वी लव ब्रेकआउट ऑफ 7810 एरिया। फिर हम लोग जा रहे हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, अ फुल ग्रीन कैंडल, crossover pending. Oil and gas, we can see more comeback. Let's see if we can get a crossover in the coming week. Next we have Nifty total market index, जो clearly support कर रहा है, हम जो comeback देख रहे थे वो story को clearly support कर रहा है this one. So that's all from my side. All the best towards your trading. I hope this video was helpful discussion. All the best from my side, and once again, happy trading.